before Gandhian phase, which we will start today. Before this, we have seen moderate, then extremist, and then revolutionary. So we have already seen moderate phase, extremist phase, and revolutionary phase. All right. Now, what difference this phase is going to create in the course of Indian national movement? Then, what was so charismatic and influential about महात्मा गांधी, जिसने हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के कोर्स को, उसकी जर्नी को इतना चेंज किया, उसके नेचर को इतना चेंज किया, ठीक है? और ऐसे उनके कौन से मेथड्स थे जो इतने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाल सके, ठीक है? विच हैज़ लेड टू Indian freedom, Indian independence. And what was the basic difference from the prior three phases is what we will see. And some key events जो इस phase में हुए हैं. Alright? Okay. Before starting, what do we know about Mahatma Gandhi? Not the birth and common thing. What do we know about the policies, the methods adopted, the philosophy of Mahatma Gandhi? अभी तक आपने जो भी बचपन से लेके स्कूल टाइम से लेके अभी तक जो पढ़ा है वो बताओ मुझे. सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. ओके. प्रियांशु? He is very noble person. Okay. A very strong statement. He is a very noble person. महात्मा का तो उन्हें टाइटल दिया गया ना बाद में. He was not always महात्मा गांधी. On the one side, he shows that he is anti-British, non-cooperation movement. Yes. And that. Yes. On the other hand, he made our soldiers to die for him. Yes. He supported Britishers in World War I. He encouraged or he influenced our soldiers to participate in World War I. Yes, Kanishka? हाँ बोलो 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 please please. On one hand, he is very he want to try masses. Okay. He want to control entire masses according to his will. That they will do what my advices are. Control masses would be a very strong statement to say, to make, but still okay. ठीक है, he wanted to influence masses, common public. Okay. And his ideologies are very, very strong. मतलब it means if he want to achieve some mean, so the means should be pure. The means should be non-violent, है ना? No matter what situation has arose, no matter how much intense the brutality of Britisher are, or no matter how violent they are acting against Indians, British are acting against Indians, he propagated and he supported his methodology of non-violence. ठीक है? All right. Okay. On the other hand, he is very cunning also. Again, very strong word to use. We don't use such words, हाँ. मतलब कि जब भी ऐसा आता था कि इन्हें मासिस को जवाब देना होता था, तो जब ये बात कर लेते थे. ठीक है. ओके. बोलने वाला नहीं ना, बोलने वाला, मौन व्रत, साइलेंट फास्टिंग. ओके, ठीक है. बेसिकली यू आर सेइंग दैट he did not held himself accountable to masses at certain places. हम देखते हैं कुछ इवेंट्स पे हम देखते हैं जहाँ पे उनकी जवाबदेही थी लोगों के प्रति, but he chose to remain silent. That's what you are saying, right? Okay. You add something. I expect you to add something. Good. He was good at mobilizing masses and he was also good with negotiating with the Britishers. Very good point. Very good point. He was acting as a bridge between the two. ये कह सकते हैं? एक की पॉइंट, जैसे ये ब्रिज वाला पॉइंट है, आर्बिट्रेशन कराते थे. गुड. ये जो आर्बिट्रेशन और ब्रिज वाला पॉइंट है, आपको याद होगा हमने मॉडरेट फेज में भी ये चीज़ मॉडरेट्स के लिए भी कोट की थी, that they were acting as bridge
between the British and the common masses, right? What difference do you see in the methodology or arbitration of Mahatma Gandhi and the methodology of moderates? क्योंकि वो भी एज अ ब्रिज काम कर रहे थे, ये भी एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं. What difference do you see? ओके ओके. सपोर्ट कर रहे थे. ऑल राइट. पहले मॉडलिस्ट जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, लॉ का इस्तेमाल करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का. ओके. पेटिशन डालेंगे, हाँ. ऑल और राइट. न्यूज़पेपर ग्रेट. में आर्टिकल डालेंगे. तो ये मतलब कि वहाँ से बाहर से पढ़ के आई थी, और ऑन द अदर हैंड गांधी जी तो सरफेस लेवल पे मार्क्सिज्म बस exactly. That's the point I was looking for. Gandhi ji was acting as a bridge or as a link between the common Indian people, है ना? Common people, common mass, the worker class, the farmer class, the peasant class, the artisan class. Whereas moderates were more inclined towards the elite and the educated class of the society, right? उनके जो डिस्कशंस होते थे, उनके जो कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, जो वो बातचीत भी कर रहे हैं, जो सजेशंस वो ले रहे हैं, दे all of those used to be confined within the limitations or within the boundaries of the elite class of the society. They had this social circle of elitism, elite class, right? उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो मेंटोर्स हैं, वो भी उसी क्लास से आ रहे हैं, the educated elite class. Whereas Gandhi ji chose to work with the common mass, with the lower class, right? So this is the key difference which we can see. All right. Now if we talk about the person himself, Mahatma Gandhi. Now we all know name Mohandas Karamchand Gandhi, belonged to Gujarat. Let's skip the very basic part, basic biography. But when he went to South Africa, we all know he went to South Africa, right? What he faced over there was extreme racism. Okay, Africa was also colony of Britishers, so the racism was severe, extreme over there. ठीक है, the blacks and the whites, the difference. गांधी जी खुद भी इस चीज़ का शिकार बनते हैं. We all know सेंट पीटर्सबर्ग train incident जो हुआ था, where he was thrown out of the coach of the train. After that, when he comes back to India, ठीक है, he starts taking active participation in the Indian politics by then. But before coming back to India, ऐसा नहीं है कि गांधी जी तब तक एकदम unknown थे, है ना? He had gained sufficient या enough popularity in South Africa as well. वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स करके, बहुत सारे ऐसे मेथड्स करके, ऑल्दो नॉट ऑन वेरी लार्ज स्केल, बट स्टिल ही वॉज नोटिसेबल देयर. ठीक है ना? ही वॉज एबल टू, ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग हिज प्रेजेंस एक्नॉलेज्ड ओवर देयर. लोग महात्मा गांधी को एज अ रिफॉर्मर या एज एन एक्टिविस्ट जानने लगे थे, राइट? इन साउथ अफ्रीका आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ऐसा नहीं है दैट गांधी जी वॉज द ओनली इंडियन ओवर देयर, देयर वर अदर पीपल ऑल्सो. सो दिस working of Gandhi ji in South Africa against racism had already made a base or had already prepared a foundation for him in India. Okay, so when he entered in Indian politics of that time, there was already a foundation, there was already a name of Mahatma Gandhi in Indian society, in Indian scenario. So he had gained his recognition from South Africa itself. All right, कुछ कहना है? Yes, he was called. He was basically called for negotiating with Britishers also, and he was called for catalyzing the Indian national movement, which was slowing down at that time. ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे चेंजेस देख लिए थे. मॉडरेट्स का अपना तरीका था, एक्सट्रीमिस्ट अपनी चीज़ें एडवोकेट कर रहे थे. देन बीच में रिवोल्यूशनरीज का भी हम देख रहे थे कहीं कहीं पे, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टिल देन, बट दे वर एटलीस्ट स्टार्टिंग टू इमर्ज. सो द
national movement, the course of national movement was going very hodgepodge, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा था उसमें, एंड some people were upset about the moderate, some people were upset with the extremist ideology. Common mass was left behind, okay, in both the cases. So there was a need, there was a gap of such a leader who could bring all the classes on one table, and then all the classes can act against the Britisher with the one common goal, not for the different goal and different ideologies. Okay, कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सबको एक ही टेबल पे ला सके, सबको एक ही लेवल पे लेके आ सके, ठीक है। और जो इंडियन मास है, जो लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, जिसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में भी है, उसको डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए देयर वाज अ नीड ऑफ सच लीडर, एंड दैट नीड वाज फुलफिल्ड बाय महात्मा गांधी. ओके, ऑलराइट. Now Mahatma Gandhi returns to India in 1915, January 1915. All right. हम आज उस दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस. Pravasis are the residents of the citizens of India who are residing outside, right? Now, if you talk about the contemporary scenario of this diaspora, Indian diaspora living outside, there's a huge chunk of population who's living outside India, and they are contributing in the economy of different countries as well as our country itself. जो revenue वहाँ से वो आता है, it is in huge amount, right? So अभी अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, so they are focusing much on NRIs, ताकि हम इंडियन डायस्पोरा को और इनकरेज कर सके, प्रमोट कर सके हमारी अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए, हमारी अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए. ओके, नाउ गांधी जी केम टू इंडिया. There he faces, or he comes in contact with three very important movements. Okay, starting with Champaran Satyagrah. All right, Ahmedabad mill strike, then Kheda. Now, can we say that these three movements or these three initial what do you call मूवमेंट्स ही कह लेते हैं हम, ये जो आंदोलन थे, इन्होंने एक स्टेज तैयार किया, एक स्टेज दिया महात्मा गांधी को. कैन वी से दैट टू बिकम अ पब्लिक लीडर, अ पब्लिक फिगर? टर्निंग पॉइंट था उनके पॉलिटिक्स में, उनकी पॉलिटिकल लाइफ में. सो ही कम्स बैक टू इंडिया, ही he makes Gopal Krishna Gokhale as his mentor, who was a moderate himself, right? And then there happens Champaran Satyagrah, okay, 1917. So 15 he comes back, he analyzes the politics, he takes mentorship from Gokhale, and then in 1917 itself, just after the 2 years, Champaran Satyagrah begins. And a leader, Rajkumar Shukla, was a prominent leader in this Satyagrah, in this movement. He invites Mahatma Gandhi to come to Champaran and lead this movement. All right. Now you can imagine that within 2 years of him coming back, he was invited, or he was requested to become a part of a movement, or to lead a movement. So it is very clear by this incident itself that Gandhi ji had its foundation built in Indian politics. Yes. Yes. हाँ. जबकि महात्मा गांधी इतनी मॉरल पर्सनैलिटी है, लोगों से डील भी करते, फिर उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने क्यों अवॉइड किया उनके इस प्ली को? महात्मा गांधी बहुत हम्बल पर्सनैलिटी हैं, बहुत आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी हैं, बट वो पहले दिन से ऐसे नहीं हैं, राइट? ही हैज़ बिल्ड हिज पर्सनैलिटी ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. समय लगा है उनको वैसा बनने में. Now just imagine 1915 वो आए हैं, अभी वो यहाँ के सिनेरियो को समझ रहे हैं, he is analyzing the things, ठीक है, और उनको एक जो डिटेल या एक बैकग्राउंड जो उनको पहले से पता है वो क्या है कि any kind of revolt, rebellion or any kind of mass movement is always suppressed by Britishers in more brutal manner. उन्होंने इतना तो स्टडी किया होगा ना, इतना तो एनालाइज किया होगा. उन्होंने कहा था गांधी जी को कि आप जाओ ना, अगर इंडिया में आप पॉलिटिक्स करो या
there motivated him to go back to India. वहाँ पे उन्होंने मतलब कि आश्रम भी बना रखा था Yes. और 2-3 ऐसी मूवमेंट्स भी थी जो वो लीड कर रहे थे, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. एक्सपीरियंस भी था पर मतलब उनकी कोई शायद गोखले ने कहा कि अगर यहाँ जो आप कर रहे हो वो इंडिया में करने से पहले एक बार 2 साल तक पूरा भारत घूमना हाँ. विजिट किया भारत भ्रमण उनका जो था एक तो वो उसमें बिजी थे तो वो से हाँ, भारत भ्रमण जो था, एग्जैक्टली माय पॉइंट इज द सेम कि एनालाइजिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर गांधी जी, क्योंकि उन्हें बाद में अगर इसमें पार्टिसिपेट करना होता तो उसके लिए उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता होना ज़रूरी थी. सिर्फ मॉडरेट्स के साथ एक कमरे में बैठ के 4 बातों पे डिस्कशन करके वो एनालिसिस अपनी नहीं करना चाहते थे. ही वांटेड टू विजिट द ग्राउंड ऑफ इंडियन सोसाइटी, ओके, टू चेक द ग्राउंड रियलिटी. Why he is, you know, the most prominent leader of our national movement. Anybody, none of the leaders have this kind of stature as Gandhi ji till date. इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन Yes. जबकि वो खुद ही इतने अगेंस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी की. He was never on the same page with the Mahatma Gandhi's ideology, but still he entitled him with this title. So there is definitely something very, very different and very, very prominent and very unusual about Mahatma Gandhi's mechanism or working methods. So when he was analyzing the Indian political scenario, then he gets a call from Champaran and he visits there. Okay. Now, what was the issue in Champaran Satyagrah? इंडिगो कल्टीवेशन. ये किया किसने था? इंडिगो कल्टीवेटर्स ने ये सत्याग्रह किया था, ठीक है, इंडिगो फार्मर्स ने. एंड द इशू वाज, द रीजन व्हाई दे डिड इट वाज 3 कठिया सिस्टम. नाउ व्हाट वाज दिस 3 कठिया सिस्टम? Indigo farmers were forced to cultivate indigo on the 15% of their total land, which is 3/20th part. Okay, so they were forced to cultivate indigo on the 15% of the total land. Now whatever land they had, now imagine scenario of 1917. Now we are talking about 1917. Already farmers have suffered a lot till now. बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक तो ज़मीन बची है. Most of the lands had been annexed by or taken up by the either the money lenders or the ज़मींदार्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं. अब उसमें भी जो लैंड बची है लोगों के पास, जिन भी लोगों के पास, उनमें से उस लैंड में भी 15% पे उन्हें इंडिगो कल्टीवेट करना है, ठीक है. सो द रेस्ट ऑफ द लैंड इज आइदर अनफर्टाइल, या फिर उस पर इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है कि अपनी नीड्स फुलफिल हो पाए, ठीक है. जिन्होंने लैंड लीज पे ले रखी है वो इतनी ज़्यादा लैंड तो ले नहीं पाए होंगे लीज पे कि जिसमें वो चलो 15% पे हम इंडिगो उगा लेते हैं, बाकी हमारी फैमिली की नीड्स सफाइस हो जाएंगी. उसमें से ही रेवेन्यू भी पे करना है, अदर टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑल्सो, ओके, एंड द डेट विच दे आर कैरिंग वो भी पे करना है. जो कर्जा चल रहा है, रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू को पे करने का, वो भी पे करना है. So this all has created a very vicious cycle for the farmers, for the cultivators. Yes, unfertile कर देती है. इंडिगो का जो फीचर ही यही है. If you continuously grow indigo on the same land, the land tends to become barren. क्योंकि it's a heavy feeder. Indigo का जो crop है, it's heavy feeder. So it takes the nutrients in excess quantity from the land. Exactly. All these reasons. Again, it is a cash crop. So 15% of your land cannot be used for any edible product. And the land portion, the land size itself is very small. Okay? So this is a vicious cycle again. कि लोग उसी दुष्चक्र में फंस गए हैं कि वो इतने पे इंडिगो उगा रहे हैं, रेस्ट पे प्रॉपर फूड ग्रेन्स हो नहीं पा रहे हैं, इंडिगो जो बेचा जा रहा है उसके बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो और पैसा लिया जा रहा है मनी लेंडर से, एंड अगेन द साइकिल ऑफ डेट, राइट. ओके, नाउ द फार्मर्स दे started to protest against these, and Mahatma Gandhi participated in this. उन्होंने ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट भी किया, and ultimately some kind of relaxation was given to these farmers. Again,
the farmers did not get the complete relaxations which they were demanding. Okay, there was some kind of relaxation which was given to them, और एक तरीके से इसको एक जीत माना गया कि okay, at least to some extent we were able to negotiate with the Britishers. Okay, कि हम उन्हें किसी तरीके से तो अपनी बात मनवा पाए हैं, थोड़ी सी ही सही. This showed कि हम एक तरीके का सोशल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स पे इफ द लीडर इज राइट. ओके, मूविंग ऑन टू अहमदाबाद मिल सत्याग्रह. व्हाट हैपेंड ओवर हियर? एनीबॉडी? हाँ, ब्रेक चल रहा था. ब्रेक चलने से पहले क्या हो रहा था? जो स्ट्राइक कर दिया था मिल्स वर्कर ने, इस पर उनकी उन्हें जो प्लेग पे पैसे मिले थे 20 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब तो They were getting hike. बड़ा कर दिया, तो फिर वो स्ट्राइक करने लगे कि हमें तो दे दो, हमें क्यों बांटा बोनस. See, basically when cotton was demanded in abundance in England, ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को उस समय कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए दे यूज टू गेट 75% हाइक. ठीक है, तो उनको 75% का हाइक दिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, वेज हाइक उनकी सैलरी में. बट प्लेग आया. ठीक है, प्लेग में वहाँ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्लेग आया, तो वहाँ पे जो फैक्ट्रीज एंड ऑल वर्क नहीं कर रही थी, सो यहाँ से एक्सेस प्रोडक्शन लिया जा रहा था एंड द वेज हाइक वाज गिवन. व्हेन द प्लेग सबसाइडेड अ बिट, दिस हाइक वाज reduced, and at some point of time ब्रिटिशर्स ने हाइक के लिए मना ही कर दिया कि हम कोई हाइक नहीं दे पाएंगे बीच में. ठीक है, इट वाज टेकन बैक. जो मिल स्ट्राइकर्स, जो मिल वर्कर्स थे, दे वर डिमांडिंग फॉर 50% हाइक, कि नॉट 75, एटलीस्ट यू गिव 50% हाइक. ब्रिटिशर्स डिनाइड दिस. ओके, अगेन महात्मा गांधी इंटरवीन्स, वो यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं. सो बेसिकली ही फास्ट. ठीक है, तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट या इवेंट बनता है जहाँ पे फास्टिंग के थ्रू एक सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाता है. ऑल राइट, एंड अगेन सम सक्सेस was able to be achieved, that was 35% of. Indian mill owners as well as Britishers, because Britishers were also paying some kind of hike to them, na, some kind of incentive to produce more. और Indian mill owners जो यहाँ पे वेज दे रहे थे, ठीक है ना, the basic wage which was paid by the Indian mill owners, उनको भी वो फंडिंग जो है या वो जो अलाउंस है या वो जो परमिशन है, they used to get it from the government ना, so government was of Britishers. So indirectly or directly it was against the Britishers only. ठीक है, तो जब मिल वर्कर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक किया, then what we see that again with the interference or intervening of Mahatma Gandhi, some successes achieved again. 35% of hike was given. Now what happened in Kheda? ब्रिटिशर्स की डिमांड की थी कि एक तो उनकी जो क्रॉप खराब हो गई थी. Yes. So basically what happened when India was facing famine, okay, severe famine, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि अगर ऐसा कोई क्रॉप फेलियर होता है ड्यू टू वेदर कंडीशंस, सो 25% से नीचे जहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा. दिस वॉज promised by the Britishers initially, that crop production below 25% will not be charged by or will not be charged with any kind of tax or revenue. Okay, but when famine occurred और crop failure हुआ, Britishers ने इस बात को reject कर दिया. They started demanding for the revenue. Okay, again intervention of Gandhiji, and the negotiations were done on the pretext that revenue will be taken only from those farmers जिनके यहाँ पे production हुआ है. So the negotiation or the result or the decision of this arbitration or negotiation was कि you will do the survey, and in that survey whoever has done production enough to pay the tax or revenue will only be charged with that tax amount. Okay, rest will be waived off. Alright, so this was your Kheda Satyagrah. Now these three events had made Mahatma Gandhi
sufficiently popular among the Indian masses. Now everybody knows the name of Mahatma Gandhi. Okay. What was the difference here? That he went on ground to listen to the masses and to participate or to lead the movement on their behalf. This was the key difference, okay? Rather than just negotiating with the Britishers, यही तो मेन डिफरेंस हम देख रहे हैं मॉडरेट्स और महात्मा गांधी में, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स से बातचीत करने के बजाय सिर्फ इशू सुन के समझ के या इशू को देख के ब्रिटिशर्स के साथ सारे आर्बिट्रेशन करने के बजाय उन्होंने क्या चूज किया? फर्स्ट ही वेंट विद द मासेस, ही स्टूड विद द मासेस, एंड देन he checked the ground reality, he analyzed the ground reality, and then he had put forth his points in front of the Britishers, and to some extent he was able to achieve little small success. Okay, so this was the very emergence of Mahatma Gandhi, very subtle but very impactful emergence of Mahatma Gandhi. Is that clear? Okay, now just write a few points. Put your heading, Gandhian phase in Indian national movement. Do I need to give you very basic points that he was born on 2nd October and all? No, we'll just start with the important points. Okay. Mahatma Gandhi had already made his mark in South Africa during his stay. Before entering Indian politics in 1915. He had developed, next point, he had developed his political philosophy based on non-violence and satyagraha, which had given a new direction to the mass movement. Next point, with the emergence of Mahatma Gandhi in Indian politics, a new phase had begun in national movement, which was phase of mass movements. Now put a heading, arrival of Mahatma Gandhi in India. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915, which is now observed as प्रवासी भारतीय दिवस.
Next point. Under mentorship of Gopal Krishna Gokhale, he had spent a year traveling across India to understand the country's real conditions. Understand the Country's real condition. Next point. In February 1916, Gandhiji made his first major public appearance at inauguration of which university? Which university? आई एम आस्किंग यू. एक यूनिवर्सिटी के इनाग्रेशन पे वो उन्होंने अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया था. कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1960? अच्छा, विच मूवमेंट स्टार्टेड? 1916 होम रूल मूवमेंट. ओके, in 1916 at inauguration of BHU. In his speech, इसी में लिखना, which is a very key point. In his speech, he criticized Indian nationalism as being elitist and not properly representing the masses. Clear? Next point. He firmly expressed his vision to represent broader Indian population including the rural poor and marginalized communities. Okay? Now put a heading, Champaran Satyagrah 1917. First point, this was the first attempt 1917. This was the first attempt at mobilizing Indian masses by Mahatma Gandhi. Mobilizing Indian masses by Mahatma Gandhi on invitation of Rajkumar Shukla. This was seen as first civil disobedience amongst Gandhian movements. Next point, it was observed against
oppressive Teen Kathiya system, it was observed against oppressive Teen Kathiya system, under which indigo cultivators had to cultivate indigo on 15% area of their total land. 15% के आगे आप 3/28 भी लिख सकते हैं. Next point. Eventually, Mahatma Gandhi was able to convince the government a committee was appointed to look into the matter, and Mahatma Gandhi was nominated as its member. As its result, Teen Kathiya system was abolished. And only 25% of money was compensated to the peasants. Okay, so peasants were given only 25% compensation. Alright. इसमें लिख लेना मेजर लीडर्स, एक पॉइंट लिख लेना मेजर लीडर्स. महात्मा गांधी के अलावा और कौन इन्वॉल्व थे इसमें? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, एंड JB कृपलानी. यस, जैसे कि पहला उनका स्टेप था और ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं यार चलो यहाँ से नहीं कहा ना, बिकॉज आई टोल्ड यू ही ऑलरेडी हैड हिज फाउंडेशन मेड. When in South Africa he was protesting against racism, against those events, then वहाँ से जो उनका एक ऑरा क्रिएट हुआ, वहाँ से जो उनका एक नाम बना, वही तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है यहाँ पे. एंड ब्रिटिशर्स हैव ऑलरेडी, दे हैड दिस आइडिया दैट दिस मैन हैड some ability to mobilize the masses. Attack, it was not possible, it was not affordable for Britishers to attack a public leader like this. Okay? When the mass is with him, when the Indian mass is behind him. Just imagine the scenario if at that moment of time Britishers would have attacked the Mahatma Gandhi, what would have happened? Sorry? ग्लोबल इमेज एक तो हैम्पर होती, ठीक है, वो भी होता, एंड ऑल्सो इट कुड हैव रिजल्टेड इन कंप्लीट chaos, वायलेंट इरप्शन हो सकता था, है ना. सो इट वॉज नॉट feasible फॉर ब्रिटिशर्स टू मेक अ सच मूव एट दैट टाइम. Okay, next heading is Ahmedabad Mill Strike, 1918. This strike was the result of disagreement between textile workers
and mill owners regarding the end of plague bonus. Regarding the end of plague bonus. Mill owners paid 75%. Mill owners paid 75% of bonus to retain the workers during the outbreak of plague. So जब प्लेग का आउटब्रेक यहाँ पे होना शुरू हुआ था तो जस्ट टू अच्छा प्लेग इज अ वेरी कंटेजियस डिसीज राइट it spreads very easily and very fast to one person to another. So जब प्लेग का आउटब्रेक हुआ था बाहर इंग्लैंड में भी हुआ था एंड यहाँ पे भी हुआ था. So मिल जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे they were leaving their jobs because a lot of people used to work in one mill. तो इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने से बहुत जल्दी प्लेग फैल रहा था और उस समय प्लेग वॉज अ फेटल डिसीज. कोई क्योर नहीं था प्लेग का. वंस यू हैव बीन इन्फेक्टेड विद इट it is fatal. Okay, so people were avoiding to work in such close conditions where such close contacts with humans are there. So just to keep them motivated and keep them intact, keep them working, 75% of bonus to the salary was given to the workers. Okay, but after the end of plague, next point, but after the end of plague, workers were demanding increase of 50% in the wages. Increase of 50% in the wages, while the owners wanted to discontinue this system. Mahatma Gandhi intervened on the request of, so who requested in this movement? On the request of Anusuya Sarabhai. Okay, Anusuya Sarabhai. Gandhi intervened on the request of Anusuya Sarabhai and undertook fast unto death. This was the first movement. Next point. This was the first movement where fasting was taken as a tool, used as a tool to create moral pressure, in political movements. Alright, next is Kheda Satyagraha. 1918. It was first instance, Kheda Satyagraha was first instance of non-cooperation. So Champaran was civil disobedience, okay, and Kheda was first non-cooperation, and Ahmedabad was first Satyagraha, where he was fasting unto death. Non-cooperation led by Mahatma Gandhi. It took place in 1918. Next point. It took place in 1918.
due to failure of monsoon, when due to failure of monsoon, peasants faced extreme distress and demanded relief from high revenue. Next point, according to the Famine Code, cultivators were entitled to total remission of revenue if crop production was below 25% of the average. What another applied on? Were entitled to total remission of revenue. Total? Remission मतलब total way off. Okay. Remission of revenue if crop production was below 25% of the average. But authorities rejected this. Gandhi intervened. Next point is Mahatma Gandhi intervened on behalf of poor farmers. And asked them to fight unto death. Eventually, government ordered collection of revenues only from those who could afford. And not to confiscate lands. Okay. Now, major leaders in this: Sardar Vallabhbhai Patel, Narhari Parikh was also there, and Indulal Yagnik. Clear? So, Yagnik.